Assalamu alaikum. Welcome viewers and welcome to my YouTube channel, Mix Masala. So here today I will tell you about a very beautiful trick, that how you can write Sallallahu Alaihi Wasallam in MS Word. Most of the people after the name Muhammad, peace be upon him, just write after that SAW. So it's okay up to somehow, but when you write the full and complete name Sallallahu Alaihi Wasallam, so it's look beautiful. So today I will tell you about that how you can write this in MS Word. So when you write the name Muhammad Muhammad, so most of the people here write just like this SAW. So it's okay up to him somehow, but it's not look like so beautiful. So but if you write complete Sallallahu Alaihi Wasallam in Arabic, so that will be look beautiful. And for this I will tell you simple shortcuts, and for this purpose you just write F D F A in capital, and after that when you press, like मैं आपको बताऊँ यहाँ पे एक तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैंने ये लिख लिया FDFA, तो आपको सिर्फ ये कैपिटल में जो है ना टाइप करना है FDFA, और उसके बाद आपने क्या करना है, कंबाइंड जो है ना एक ही टाइप मतलब Alt और X को आपने प्रेस करना है। यहाँ पे मैं आपको करके दिखाता हूँ। फॉर एग्जांपल इसके बजाय अगर मैं यहाँ पे शिफ्ट कैप्स लॉक जो है ना प्रेस करके FDFA और साथ में मैं अगर Alt X प्रेस करूँ, देख लो, ये देख लो कितना प्यारा लग रहा है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये पूरा आ गया। तो ये एक छोटी सी जो है ना एक कोशिश थी ताकि आप लोग, और एक छोटा सा वीडियो और बहुत ही खूबसूरत ट्रिक ताकि आप लोगों तक मैं पहुंचा सकूं, और आप लोग इससे जो है ना अपनी टेक्स्ट को और अपनी पैराग्राफ्स को और अपने जो है ना राइटिंग को खूबसूरत बनाए। बहुत ही प्यारा लग रहा है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। थैंक यू वेरी मच। एंड अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और जो है ना अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।